News coming in right now. Samajwadi Party leader Maurya stokes controversy. He defends Karsevaks firing during Ayodhya movement. SP leader says, and I quote him over here, the sabotage that was done on a large scale by anarchist elements. The then government had opened fire to protect the constitution, to protect the law and to maintain peace. That was the government's own duty, and the government had done its duty. According to sources now, in India Today's meeting of Samajwadi Party, many MLAs raised the issue of Swami Prasad Maurya's statements and asked Akhilesh Yadav to do something this time. Akhilesh Yadav has assured the MLAs that such things will not happen again. So Swami Prasad Maurya there, one of those who is known to make a lot of controversial statements, Samajwadi Party leader says and defends the action of the then Mulayam Singh Yadav government against Karsevaks during the Babri demolition. He in fact has said, and I will quote him over here, the sabotage that was done on a large scale by anarchist elements, the then government had opened fire to protect the constitution, to protect the law and to maintain peace. That was the government's own duty, and the government had done its duty, unquote. According to sources, in the meeting of Samajwadi Party recently, many MLAs raised the issue of Swami Prasad Maurya's statements and asked Akhilesh Yadav to do something this time. Akhilesh Yadav has assured the MLAs that such things will not happen again. अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। सुब्रत पाठक ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इज ओवर द फोन लाइन विद मी। सुब्रत जी, आप किस तरह से देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ये स्टेटमेंट है कि कार सेवकों पर जिस तरह से गोलीबारी की गई थी 1990 में, उस 92 में, उस वक्त जो कार्रवाई की गई थी वो सही थी? देखो, ये स्वामी प्रसाद जी जो कुछ भी बोलते हैं वो अखिलेश यादव उनको लिख कर देते हैं, ये वही पढ़ते हैं और ये स्पष्ट है। इससे और स्पष्ट हो गया कि जिस प्रकार से कल अखिलेश यादव जी ने राम मंदिर का न्योता मिलने के बाद भी और वहां पर जिस प्रकार से जाने का मना किया है, ये उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वो किस प्रकार से केवल वोट की लालच ही इनको है और वोट के लिए कुछ भी करेंगे। धर्म परिवर्तन भी कल को वोट के लिए कर लेंगे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ये इस प्रकार के लोग हैं, तो इन्हें न धर्म से मतलब, न संस्कृति से मतलब, न देश से मतलब, इनको मतलब केवल वोट से है। और उस वोट के लिए देखो, ये रामचरितमानस भी जलवाते थे, स्वामी प्रसाद को आगे कर देते थे और आज तो सीधे सीधे अब जो कुछ हुआ तो हमने लोगों ने तो कहा ही था, मैंने तो स्वयं कहा था कि इनको तो बुलाना ही नहीं चाहिए मंदिर में, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रस्ट ने इनके पास में न्योता भेजा और उसके बाद इनका चरित्र सबके सामने आ गया। तो कुल मिलाकर जो व्यक्ति ये कहता हो कि मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं है, न मैं पूजा करता हूँ, न मेरी पत्नी पूजा करती है, और वो आदमी उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? ये सब रामद्रोही लोग हैं और इनको समय आने पर जनता जवाब देगी। आपने बताया कि आप ही थे जिन्होंने कहा था, पार्टी की तरफ से एटलीस्ट आपने अपनी तरफ से एक निजी वक्तव्य दिया था कि समाजवादी पार्टी के लोगों को इस प्रोग्राम के लिए, इस कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी, प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्हें इनवाइट नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद आपने कहा कि इनविटेशन गया उनको। तो आपको लगता है कि वो डिसीजन गलत रहा? जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसके चलते तो अब समझ में आ रहा है कि वो डिसीजन गलत रहा। कुल मिलाकर ट्रस्ट ने ये संदेश दिया कि वो ट्रस्ट सबका है, मतलब वो तो कुल मिलाकर राम सबके हैं और राम सबके हैं ही। हिंदुस्तान में जन्मा कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, उसके पूर्वज तो राम ही है। तो कुल मिलाकर ये तो सत्य है, लेकिन कुछ लोग सत्य को स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो उनको लालच केवल वोट की है। तो वो मैंने जो कहा, मैंने ठीक है, ट्रस्ट ने उनको भेजा, लेकिन ईश्वर को ही नहीं बुलाना था उनको, उनकी बुद्धि फेर दी और वो देखो नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सब जो निर्दोष राम भक्त जो मारे गए थे, और एक तो जो समाजवादी सरकार में मारे गए वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन लड़ाई 500 साल की, कितने ही लोगों का उसमें बलिदान हुआ। तो ये बलिदानी और इनकी आत्मा को कष्ट होता अगर ये लोग वहां के ऊपर पहुंच जाते हैं। जी सुब्रत जी, शुक्रिया। इनकी बुद्धि फेर दी।
जी सुब्रत जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. Subrat Pathak there, of course, one of the BJP leaders would openly said that the Samajwadi Party shouldn't be invited to the consecration ceremony to the Pran Pratishtha because the Samajwadi Party was responsible. The Mulayam Singh Yadav government then in Uttar Pradesh was responsible for opening fires on Karsevaks in Ayodhya in October 1990. Let's listen in to Mahant Rajudas. Okay, we'll try and get in more reactions that are coming in right now. So, as far as the Samajwadi Party circles are concerned, within the circles itself, there's a lot of discomfort with what Swami Prasad Maurya has said. In fact, that is what Samarth was telling us. Samarth Srivastav, my colleague, is on the ground, in fact, tracking all these developments, these political developments. Samarth, what is the Samajwadi Party's position again about Swami Prasad Maurya's statement? And have they rejected the invitation? They will not be participating in the consecration ceremony, the Pran Pratishtha, on January 22nd? See, Paulami, there are many perspectives to this particular thing because there are many MLAs in the party who are not happy with Swami Prasad Maurya and his statements that are coming against the Hindu gods. So that is the big thing. Be it Manoj Pandey and many other names are there, Rakesh Pratap, they are clearly upset and also in a way countering Swami Prasad Maurya and again asking Akhilesh Yadav to remove him from the party. In the recently concluded meeting of Samajwadi Party, many MLAs raised this question towards Akhilesh Yadav that Swami Prasad Maurya in a way is demoralizing the things in Samajwadi Party in a way that will cut down the vote percentage of the Hindus, and that's what the concern of these MLAs. Though Akhilesh Yadav has clearly said, cleared his stand that no party leader is allowed to speak on any religion or anything like that. But despite that, you saw yesterday, after Akhilesh Yadav's ultimatum, again Swami Prasad Maurya in Kasganj, it clearly sparked another controversy, justifying the opening of fire on the Karsevaks in 90s, and that is a bigger concern. But what BJP is clearly saying that he's saying what Akhilesh Yadav wanted to say. But the party MLAs are now in a fury mode and clearly asking Akhilesh Yadav to remove Swami Prasad Maurya. The bigger thing is that why he isn't being removed, that's the question of the party MLAs. And this particular thing, in a way, is dividing the MLAs within the Samajwadi Party because party is happy with the preparations for Lok Sabha elections, everything is going fine. But when it comes to Swami Prasad Maurya, these MLAs, especially the Brahmin principles of Samajwadi Party, are clearly upset and angry over Swami Prasad Maurya and his statements. And at that time, when you saw VHP claiming that they have sent the invitation to Akhilesh Yadav and Akhilesh Yadav denying the same, the uproar for this particular thing has increased. Samad, just stay on with us. So, Samad, giving us a perspective of what the Samajwadi Party circles themselves are feeling in terms of Swami Prasad Maurya's statement, his latest statement, of course, justifying the opening of fire on Karsevaks in Ayodhya in 1990. Let's listen in to Mahant Rajudas now. बार ऐसा बयान देना और उसके बाद आपका यह कह देना कि उनका निजी बयान हो सकता है, यह समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, तो तत्काल नैतिकता के तौर पर समाजवादी पार्टी से इसको बाहर का रास्ता दिखाइए. नहीं तो जिस प्रकार से इनका बयान है, आने वाले दिनों में आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी. Okay, so that is the reaction that's coming in to what Swami Prasad Maurya has said, saying that every time to have made these sort of controversial remarks and then the Samajwadi Party distances itself from Swami Prasad Maurya and says that that is his personal opinion, that can't go on. And that is the sentiment very ironically being expressed within the Samajwadi Party as well, because as my colleague Samarth was pointing out, many MLAs are quite uncomfortable with the statements, the controversial statements that Swami Prasad Maurya seems to be making time and again saying this hurt the party's campaign.